तृप्त भई सच भोजन खाया, मान तन रसना नाम त्याया। तृप्त भई सच भोजन खाया, मन तन रसना नाम त्याया। जीवना हर जीवना, जीवन हर जप साध संग रहाओ। अनेक प्रकारी वस्त्र ओढ़ाए, अंदिन कीर्तन हर गुण गाए। हस्ती रथ अस असवारी, हर का मार्ग हृदय निहारी। मान तन अंतर चरण त्याया, हर सुख निधान नानक दास पाया। मान तन अंतर चरण त्याया, हर सुख निधान नानक दास पाया। सतगुरां दी साजी नवाजी साध संगत जीओ, प्यार नाल रसना पवित्र करनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज दा पवित्र हुक्मनामा सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब तो सतगुरां ने सारी मनुखता की भलाई वास्ते बख्शिश किया है, जो कि अंग 684 ते सुभायमान है। राग तनासरी जो एक खुशी का राग है, मन में खुशी की उमंग पैदा करता है। गायन का समा दिन का 5वां पैर दोपहर के 12 बजे तो लैके 3 बजे तक। गुरु महाराज अज दे पवित्र वाक विच फरमाना करते हैं, सानू महसूस होना चाहिए भई यह जीवन काहदे वास्ते। साध संगत जी, जदों असीं कई बारी चर्चा के अग्यों निकलते हैं ना, उत्थे बाहर लिखिया हुंदा वट इज दिस ह्यूमन लाइफ फॉर। तुसीं मनुखा जीवन चाहे हो काहदे वास्ते। चर्च के अंदर आओ, असीं तुहानूं दसांगे। ऐदां दीयां गल्लां हुंदियां, पर यह सारी मनुखता वास्ते एक सवाल है भी असीं इत्थे क्यों आ। कई बच्चे तो निराश होए आ, कहंदे असीं जमना चाहते ही नहीं सी, पता नहीं कित्थों जम पे। रब ने सानू दुनिया च भेजता, सानू पता नहीं लगता भी क्यों असीं इत्थे आ। साध संगत जी, गुरु महाराज फरमांदे हन, असीं इत्थे वाहिगुरू नूं जानन वास्ते, ओहदी कुदरत का आनंद माणन वास्ते, ओहदी होंद का आनंद माणन वास्ते इत्थे दुनिया च आए हैं। जीवना, जीवना मैंने जीवना काहदे वास्ते जीना। हर जीवना वाहिगुरू दी रचना, ओहदी कुदरत, ओहदी होंद का आनंद माणन वास्ते, ओहदी सेवा करन वास्ते। जदों सानू पता लगता भी हर एक जी दे विच वाहिगुरू है, तां फिर मन दे विच गुरु का शब्द रोशनी करता है। दया जाने जी की किछ पुन दान करे। सारिਆਂ ते दया करना, पुन दान करना, यह उस वाहिगुरू वास्ते जीवना, निष्काम होके जीना। जिहड़ी निष्कामता जे ना होए उत्थे गुस्सा हुंदा। जिथे निष्कामता ना होए या बंदा सैल्फलैस ना होए, उत्थे हंकार आंदा, लालच, मोह, सारे जिहड़े अवगुण ने पैदा हो जाते हैं। सो गुरु महाराज फरमांदे हैं, जदों असीं सेवा करते हैं गुरु के आशे अनुसार निष्काम होके, ते स्वामी की प्राप्ति होंदी है। सेवा करत होए नह कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। यही असीं करना है। जीवना हर जप साध संग,
पर जीवन की जिहड़ी जाच है वो साध संगत विचों प्राप्त होएगी। जदों असीं साध संगत विच आने आ, साडा आन दा की भाव हुंदा? पहले असीं अपनी दृढ़ता करके आईए गुरुद्वारे साध संगत दे विच भी असीं कुछ सिੱਖਣ जाना। उत्थे किसी दे नुकताचीनी झगड़े करनी जाना गुरुद्वारे, या किसी नूं बुरा भला कहने वास्ते नहीं जाना, या कारां दे भाव पता करनी जाना, या सूटां दे भाव पता करनी जाना। उत्थे साध संगत जी, एक धन धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दे समय दे विच भाई सुथरा हुंदे सी। भाई सुथरा जी कुछ गल्लां कर जांदे सी जिन्हां तो बहुत सबक मिलता सी। एक दिन साध संगत दे विच आके ते पिछे बह के कुछ इहो जिहियां गल्लां कीतियां, साध संगत नूं चंगे नहीं लगियां। हुण सारी संगत गुरु दी संगत करन आई सी, शब्द सुनन आई सी। पिछों भाई सुथरा जी गल्लां करदे आ ते सारी संगत दे कन्नां च पैंदी। उन्होंने महाराज अगे कंप्लेंट की, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज अगे, भाई सुथरा ते इत्थे बाणी सुन नहीं आंदा, इधर दियां उधर दियां गल्लां करी जांदा। भाई सुथरा जी एक हफ्ता लभे नहीं। एक हफ्ते बाद जदों लभ्या ते उन्हां नूं धन धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दे अगे पेश किया गया ते कहा, भाई सुथरा तू संगत दे विच आके पिछे गल्लां मारी जाना, सारियां दी बिरती तोड़दा तू। भाई सुथरा जी कहंदे, मैं किहड़ियां गल्लां कीतियां, किहड़ियां गल्लां गलत कीतियां? साध संगत दे विचों सारियां ने कहता जी तू ऐ किहा सी, तू ऐ किहा सी, तू ऐ किहा सी। ते भाई सुथरा कहंदा, ठीक है, मैं अपना कसूर मन्नांगा, जे मैनूं दसो भी उस दिन कथा किहड़ी चलदी सी, हुक्मनामा किहड़ा सी, किहड़े राग दे विच सी। सारे चुप। भाई सुथरा कहंदा, मैं यही दसन आया तुहानूं, तुसीं संगत दे विच आउंदे हो, गुरुद्वारे आंदे हो, पर साध संगत करन नहीं आंदे। जे कोई गलत एक करदा, गल गलत करदा, वो तुहाडे चेते रहिंदी हफ्ता हफ्ता। जिहड़ा हुक्मनामा उस दिन आया, जिहड़ी कथा होई, किसी नूं नहीं पता। गुरु महाराज मैनूं दसो मेरा कसूर है। महाराज हस पे, कहंदे वाकई जदों साध संगत दे विच असीं आने आ, एक कोई माड़ी गल करदा ना, वो एक साल याद रहिंदी आ। एक साल बाद पुछो भी हुक्मनामा किहड़ा आया सी उस दिन, किसी नूं याद नहीं। सानूं सुचेत होना पेगा। साध संगत जी, गुरु महाराज फरमांदे हन, जीवन की जाच साध संगत विचों मिलेगी। जीवन हर जप साध संग। साध संगत किस तरह? तुसीं इकल्ले भी साध संगत कर सकते हो। जदों गुरबाणी का विचार, जपजी साहब की बाणी का विचार तुहाडे हिरदे विच चलदा, तुहाडी साध संगत हो रही है। जे तुसीं टाउन सेंटर दे विच हो ते ख्याल गुरु दे विच है, जे कोई लोड़मंद है उहदी तुसीं मदद करदे हो, तुसीं साध संगत कर रहे हो। सो गुरु महाराज फरमांदे हन, गुरबाणी का विचार जदों हिरदे विच चले, गुरबाणी का विचार जदों हिरदे नूं निर्मल कर दे, उस अवस्था नूं कहंदे हन साध संगत। मन बच करम जे तुझे अराधे, छे सब्बै फल पावे। जिन्हां ने तुहानूं अकाल पुरख वाहिगुरू जी, सतगुरु जी, जिन्हां ने तुहानूं मन करके, कर्म करके, बचना करके अराध्या, तुहाडे हुक्म दा अमल कीता, उन्हां दे सारे फल प्राप्त हो जांदे आ, सारियां इच्छा पूरियां हो जांदियां। त्रिपत भई सच भोजन खाया, मन तन रसना नाम ध्याया। गुरु महाराज फरमांदे हन, साध संगत दे विच मन ते तन दे नाल असीं उस वाहिगुरू दा जाप करना है, तां मन दे विच तृप्त पैदा हुंदी। तृप्त मैंने संतोख। हुण संतोख की जिहड़ी डेफिनेशन है, जे कोई तुहानूं चंगा कह दे तां भी वधिया, खुश हो तुसीं, वाहिगुरू तेरी कृपा। जे कोई माड़ा कह दे, कोई कंप्लेन नहीं। जे वाहिगुरू दुख दिंदा तां भी ठीक है, जे सुख है वाहिगुरू तेरी कृपा। जे कोई रिस्पैक्ट करदा, मान दिंदा तां भी ठीक है, जे अपमान हुंदा तां भी वाहिगुरू इहदे तो मैं कोई सबक सीख सकदा। मेरा अपमान क्यों होया? मेरे अपनी गलती करके, कर्मा करके।
दद्दै दोष न देऊं किसे, दोष कर्मा आपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै अवर्जना। हर दुख दे पिछे एक राज है, एक सबक है, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨੋ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਵਸਤਰ ਉਡਾਏ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਨੇ ਹੋਣ, ਰੰਗ ਮੰਨਦੇ ਹੋਈ। ਅਨਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਜਦੋਂ ਹਿਰਦਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ, ਅਨ ਦਿਨ ਮੈਨੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ। ਹਸਤੀ ਰਥ ਅਸ ਅਸਵਾਰੀ, ਹਰ ਕਾ ਮਾਰਗ ਹਿਰਦੈ ਨਿਹਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨੋ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਭਾਵਨਾ? ਹਰ ਕਾ ਮਾਰਗ ਹਿਰਦੈ ਨਿਹਾਰੀ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆ, ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਚਰਨ ਧਿਆਇਆ, ਹਰ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਲਿਆਣੀ। ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਚਰਨ ਧਿਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਹਰ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਧਾਨ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪਾਇਆ, ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। Today's ਹੁਕਮਨਾਮਾ is blessing from Sachkhand Shri Harmandir Sahib in Raag Tanasri. Raag Tanasri provides the cheerful mood. The recommended time for recitation of the Shabad in Raag Tanasri is the 5th pair of the day, which is 12 o'clock in the afternoon till 3 o'clock. There are total 8 pahars in 24 hours. Every pahar is 3-hour duration. Dhan Dhan Guru Arjan Dev Ji Maharaj reveals the purpose of this life, why we are here for. And this is not a ingenuine question. It's a very, very genuine question. Some of the youth, they are quite open with me and they asked me this question, why we are here? I didn't want to even be born. Why I am here? Guru Maharaj in the Gurbani has revealed that we have to enjoy and relish every moment. Some people say that we are going to start enjoying when we retire. We are going to start enjoying when I have £1 million in my bank. That is a wrong statement. That's the wrong mentality. We are supposed to enjoy every moment. Every moment. Anand pya meri mai, Satguru mein paya. Now condition is, once we realize Guru's message, essence, once we have realized the Shabad within, then we enjoy and relish every moment. Ananda pya, Ananda is a state of permanent bliss and happiness. Ananda pya meri maaye Satguru mein paya. When I realize the Satguru,
the true wisdom, the true Gyan, the Almighty Creator within me. Dhan Dhan Guru Gobind Singh Ji Maharaj in Japsa Bani describes Vaheguru as Aqal Alame, ke Sahib Kalame. Vaheguru is Aqal Wala. Aqal Wala means most wise. Ilm. Ilm is Farsi word which means knowledge of everything, education. Vaheguru is the source of wisdom, source of intelligence, source of knowledge, knowledge of the whole creation. And Vaheguru is the ultimate power who resides within our mind, within our body, and throughout the creation. Jeevana har jeevana. Vaheguru, I live just to serve you, to realize you. Once I have realized you, I have become content. Tript bhai sach bhojan khaya. I have become absolutely content. I'm enjoying every moment. I do not have to wait for £1 million in my bank. I don't have to wait for retirement. I don't have to wait until I get my own house. I'm enjoying every moment now. This is Guru's wisdom. Divine people, the Gurmukhs, saints, they enjoy the present. Present means this moment. They don't worry about what's going to happen in the past. They don't worry about what has happened in the past and what is the future. They know if they are enjoying, if they are focused on the selfless service of their Creator, their future is bright. I hope you're getting the message. If in the present you are able to focus on Akal Purakh Vaheguru, Akal Purakh Vaheguru, the Creator, Almighty God is focus of your life, that you have to serve Akal Purakh Vaheguru, then your future is absolutely bright. Guru Maharaj reveals, Tripat bhai sach bhojan khaya. When I consumed the true food, I became content. What is the true food? What is the true nourishment for the body? Man tan rasna naam te aaya. With my mind, man, with my body, tan, that implies the actions. Through my actions and through my tongue, rasna. Man tan rasna naam te aaya. I follow Vaheguru's naam, Vaheguru's hukam, Vaheguru's order. It's no good saying that we need to be kind to the humanity. It's no good saying we need to be kind to all living beings. Daya jane ji ki kich pun daan kare. This is the verse from Asa Diwar Bani. When Bhai Sahib, the Kirtani hai, they sing this Bani, everyone is moving their heads. Beautiful Bani, beautiful Rag. What is the point in moving like a snake if there is no implementation? Guru Maharaj reveals in the Bani, don't make the Gurbani as kanras. Don't limit the Gurbani just to your ears. Let the Bani sink in your mind. Man tan rasna. With your tongue chant Vaheguru's praises, chant the Gurbani. But let it get to your mind. Once Gurbani gets to your mind, then your tan, your body is going to act like what Guru has said. If Guru is focus of your life, then you will enjoy your life. Guru Maharaj reveals, Anek prakari bastra udaye.
Anik means many sorts. Prakari means sorts. Anik means many. Anik prakari bastra. Bastra means your dress. Odai means enjoy. You will enjoy many type of dresses, uniforms. It implies that you will live like royals, because your priority in life is serving God selflessly. Andin Kirtan Hargun Gaye, day and night, you would realize that all the blessings, all your wealth, all your possessions are blessing of Akal Purakh Vaheguru, and you are singing Vaheguru's praises. Andin, day and night, Kirtan, Vaheguru's praises, Har Gun Gaye. Har means God, immortal God, evergreen God. Har Gun Gaye, you are singing his gun, praises. Hasti Rath As Aswari. Hasti means elephants. Rath means chariot. As means horse. Aswari means ride. You will have the ride of the chariots, horses. You will enjoy your life, because Vaheguru, the creator who has created the horses, the elephants, the cars, the whole universe, is your owner. You have accepted and acknowledged he is your owner. You are obeying his command. Har ka marag hriday nihari, in your mind you are following Vaheguru's marag, Vaheguru's path. Man tan antar charan te aaya. Meditate upon Vaheguru's charan in your mind. Vaheguru is formless. The metaphor is Vaheguru's charan is Vaheguru's feet. When we want to surrender ourselves, what we think of? Bowing to a person at the feet. So Guru Maharaj is revealing, with humility, surrender yourself to Akal Purakh Vaheguru. Serve him with your body and mind. Har sukh nidhan Nanak Das paya. Vaheguru, who is the treasure of sukh. Nidhan means treasure, sukh means peace. Who is the treasure of peace? You will obtain, you will realize within your body. We look for comforts outside. This is worldly way. But Guru Maharaj points us inside. Sab kich ghar mein. Ghar means your mind. Sab kich ghar mein, bahar nahi. If you are looking for peace, looking for happiness in your life, that is within you. Saad Sangat ji, deer is so influenced by the smell, the scent of musk. Runs around in the forest. But poor deer doesn't know the musk is inside him. Jio kasturi mirag na jane pramda param pulaya. Kasturi means musk. That beautiful perfume comes from within the deer, but deer doesn't know. Wanders around, running around in the forest, wastes his time. Similarly, Guru Maharaj reveals the peace, the anand, the bliss is within. People are running around trying to have anand in their life, happiness in their life. Definition of Sat Sangat. You may be on your own. You are still doing Sat Sangat if there is Guru's wisdom, Guru's vichar in your mind. If there are praises of Vaheguru in your mind. No matter where you are. In Dhan Dhan Guru Har Gobind Sahab's Darbar, there was a Sikh, Bhai Suthra Ji. Bhai Suthra Ji, he used to convey message in different ways. One day he comes to the Sangat and he started saying few words which Sangat didn't like. They thought they were inappropriate words. Bhai Suthra Ji disappeared for a week.
And Sangat complained to Dhan Dhan Guru Hargobind Sahib Maharaj that Bhai Suthra, he said some inappropriate words in the Sat Sangat. When after a week Bhai Suthra was made to present in front of Dhan Dhan Guru Hargobind Sahib Maharaj, Bhai Suthra said, "It's not my fault. Tell me what wrong did I say in the Sangat?" Sat Sangat ji, almost everyone in the Sangat was able to tell what Bhai Suthra said. Now Bhai Suthra said, "I would accept my fault if anyone from the Sangat can tell me what katha was being told on that particular day. What was the Hukamnama translation being done on that day?" No one in the Sangat could tell what Guru Maharaj was saying. So although people were present in Guru's Sangat on the day, everyone listened to what Bhai Suthra said and no one remembered what Guru Hargobind Sahib said. Now we need to be careful. We come to the Gurdwara. Do we come here to listen to the Katha and Kirtan, or do we come here to listen to the slander, gossip? Or are we here to find about the rate of the cars, price of the cars, which car is good, where do I get it from? So Sat Sangat ji, we are in the holy company, we are in the Sat Sangat. When Guru's thought, Guru's love, Vaheguru's love runs in our mind, that is the Sat Sangat. If we are in the Sat Sangat 24/7, then har sukh nidhan Nanak das paya. The treasure of peace, Vaheguru, we would realize within ourselves and be in bliss. Sat Sangat ji, Pulan Chukkan di maafi. Be blessed. May Satguru bless all of you. Because prayer is very, very important in our lives. If we pray to Satguru to help us to walk on the path, surely Satguru Sada Dayal hai Bhai. Satguru is very kind, very compassionate. Vaheguru will show you the path and bless you with the Anand. Pulan Chukkan di maafi. प्यार ना फतेह सांझी करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।